कश्मीर इकोनॉमी में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेट मी टेक अ लुक एट दिस हियर, 1 सेकंड। तो टोटल सर्विसेज सेक्टर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं 63.57%. It means that 67% of the state's income comes from services sector, which is like very big. इसमें से भी अगर पूछो ना so comparative advantage, trade is 11.52%. Why? कैसे सांझे मैक्सिमम लोग दुकान पर आवाना. So this is that kind of trade. फिर ये सारा चैनल में चलता है, wholesaler, retailer, super stockist, but 12% of services are totally trade based. ठीक है? नेबराना चीज अगर तो दिल गए ना मकान बनाने में अक्सर दिल का सान सो दे टेल यू व्हाई डू कम हियर अशी वैसे भी सॉरी माल कश्मीर सोचना तो दिल्ली का जो लगभग 80% माल है ना वो वैसे भी कश्मीर ही आता है सो ट्रेड यहाँ बहुत ज्यादा होता है दिस इज अगेन अनदर थिंग दिस मींस दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आवर ओन थिंग्स इसके चांसेस बना कंज्यूमर स्टेट व्हिच अगेन टेक्स सम मनी बैक टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री अच्छा ना लीकेज इससे हमारी इकोनॉमी बहुत श्रिंक होती है अगर हमारा ट्रेड कम होता एक्सपोर्ट ज्यादा होता सो इट वुड मेक अस रिचर कंपैरेटिवली अच्छा another very important sector is hotels and restaurants so it again contributes a very good number which is like 10.22% होटल चाइम के मशहूर क्या है टूरिज्म जो लेकिन रेस्टोरेंट्स देखिए पिछले 5-7 सालों में यूज काजल में कोई नीचे लगा चुका है रेस्टोरेंट रहा so and very good thing is कि an average person likes to have food 2-3 बार हम हफ्ते में शोरमा नहीं खाएंगे तो शायद दिमाग खराब हो जाएगा you know तुझे all these things so it makes you know you have to understand from state to state suppose अगर आप हरियाणा not हरियाणा let's say आप यूपी जाएंगे एवरेज हिंदू बंदा है ब्राह्मण बंदा है सो क्या ही कमाल तो वहां पे लीज सेक्टर इतना फ्लरिश नहीं करेगा रेस्टोरेंट सेक्टर दाल चावल कितने का ही मिलता है लेकिन प्लेसेस वेयर देयर आर मुस्लिम्स और पीपल हु लाइक अ लॉट ऑफ नॉनवेज वहां इन चीजों का बहुत स्कोप रहता है और वहां आप लोगों के लिए भी स्कोप रहता है कि तू करे इनोवेट तो बनाए तीन ख्याल माज लगे यू नो एंड देन यू कैन एक्चुअली सेल इट इन द मार्केट सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी ठीक ठाक रोल है एंड रियल एस्टेट अगेन इज अ वेरी सॉलिड सेक्टर इन आवर इकोनॉमी व्हाई बिकॉज अगेन ऑल ऑफ अस लाइक्स टू हैव देयर ओन होम्स सारा बनावा अलग मकान घेऊन बिग बना पगा घेऊन मकान दूसरी बनाए वी ऑल हैव दिस ड्रीम ऑफ हैविंग अ वेरी बिग सेक्टर और अभी तुम लोगों ने देखा वो इंस्टाग्राम पे देयर आर दिस लिटिल बॉयज नॉट लिटिल बॉयज हमारे जितने क्वाइट बिग तीन क्या चे बनने में रियल एस्टेट एजेंट अगेन तीन कजन इवन वरिश मारक मोसा मगर तुमचे कुणी लगा मगर जर मोशिकासा व्हाट डू तुमचे जमीन पता ना जो रटा पता फिर मकान बनावा पता सजावा तो इंस्टाग्राम पे करना और उसमें बहुत पैसा है मतलब साल में एक मकान बिक जाएगा तो तुम सेट हो मेरे खानदान में लगभग शायद सब लोग हैं सो आई हैव ऑल दिस एक्सपीरियंसेस बट कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये आने वाले टाइम में और फ्लरिश करने वाला है क्योंकि द टेस्ट ऑफ पीपल फॉर हैविंग लग्जूरियस हाउसेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे यहाँ शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसके घर में कम से कम एक कमरा फैमिली वाला नहीं होगा so you know these are our tastes and you have to evolve your economic outcomes in light with your people ये मान लो हम गॉड बनाओ ना ख्याल कि बुबा मामा काम पत्तन भी मुलाजमन like that was the best idea जो हैदरपुरा परेपुरा साइड है ना तब पर आई थिंक आइडिया तुम गॉड तो वहां से वो बड़े-बड़े अंकल्स होते हैं फॉर्चून 90s में ख्याल आया था 90s में जो एक्स्ट्रा पैसा था इट्स लाइक ट्रू they put it in real estate तब तो लाखों में वो मकान बनाए आज करोड़ों में बेच रहे हैं and that is how this sector is boosting so much from the side I live गुलाबाग there are these new colonies coming up तो रोज एक अंकल का बेटा आके अपना मकान बना रहा है ना माजिहार मुअल सुनजमी they actually do that 15 मरल में प्लॉट बनायो मकान बनायो किन्यो and you make a lot of money so this is the reason real estate sector is doing so good in our economy another very important part is the public administration Ashu सारनी ऑब्सेशन सरकारी नौकरियां पंचो ना मैं भी तसस पागल हूं सिक्स साल से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी बस एनीवे सो बेसिकली क्या हुआ था 1950s का जब टाइम था ना नया कश्मीर मैनिफेस्टो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो और and your father won't be okay if you're not doing a PhD. So, a master's to him so we are basically 30-40 years ahead of the rest of the country because we have been given free education 60-70 years before. These were the three changes. एक ये कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, एक ये कि हमारे औरतों के लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम रखा, एक ये कि देन नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने क्या किया था
Timo खोज industries मगर खोजे public sector response. Timo do ऐसा खोलो industries and government would employ all the people in Jammu and Kashmir. ताकि तो सब graduation got qualification but post graduation आगे कुछ यूँ मतलब it's not हंके मंके average person जो बना सरकारी नौकरी. You know my mother-in-law has this thought. तेरे शुरू आता है ये मिस्टर सरकारी नौकरी है पर दिन तो खुदा के business है. She has that term so तब बिचौर बेरोजगार. It's not just my mother-in-law, it's everybody in our society. अगर नहीं के सारे साथ हमारे respect सर सुन दुआ साथ तो आज हम तो 5 times से पहुंच जाना. बाकी दबा हो जाएगी जो अक्सर. You know this is a mentality. और ये हम तो मंग नहीं है. It has historic factor. Government ने बोला था तुम पढ़ो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और इसी चक्कर में बहुत सालों तक इन्होंने बहुत लोगों को employ किया. And that is why our public administration sector is so high that ये इतना ज़्यादा contribute करता है हमारे state की income को. But I'll show you the graph. The trend is changing and you guys have to live with that. I'll show you average holding size of a person in Jammu and Kashmir. So you see, अगर the rest of the country which ना हिंदुस्तान उसमें ये एक तो यहाँ ग्राफ के बहुत केसेस में नेगेटिव भी है, ठीक है? मतलब पैट्री नजर नहीं नजर आता है. But look at a person from our part of the world. Even श्रीनगर में भी लोगों की average holdings अच्छी खासी है. श्रीनगर में usually किसकी जमीन होती है? या तो दुकान आसान या तो मकान आसान. So see, and there are places like Udhampur and Samba जो मैंने पहले ग्राफ में दिखाया था, वहाँ जमीन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है, इसलिए average holding बहुत ज़्यादा है. So this is again a very good picture, very good graph representing the egalitarian society. As people living in this part of the world, as economic opportunities. ये मैं harness को करें मगर instrument harness का नाम की. So each one of you, अगर तो दौड़ा ही गया चलना थोड़ा जमीन है उसके पास ट्रेड आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हो. You want to make a lot of money. But you will food technology, so you can process, make some face creams and stuff, whatever. So it's basically a lot of economic potential here. मगर ये जो sorry unharnessed. दौड़ा के लोग जो IUST पढ़ने आते हैं ना, I had a scholar. Guys, quiet. I had a scholar from Doda. So उसमें ना bubble frame of mind is also the one नाम है चे category भी क्या चूज़ करना है. Eventually उनका वो रहता है कि category वगैरह चे नौकरी. तो उनका जो ये है ना ये सारा unutilized जाता है. But basically this is a lot of crores and crores of rupees है per family which could be harnessed but they are not. So please take notice of this. You can do a lot. अच्छा this I'll skip. Okay, this is the production of major horticulture crops for the year 2021-22. So you see that your maximum contribution in horticulture comes from apples, and these are the growing sectors where apricot वगैरह है. आप एक्टिविटी से ऐसी processing करें. But have you seen this at this paper? Maybe you guys know more about this. कि इसको तो waste छिपाना एप्पल का रंग, cold store capacity कम है, juice नहीं बना रहे हैं, दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं. So this is again a thing where we can flourish. This is the I'll show you a graph for this. Forget this. These are the number of industrial या manufacturing units है इस बनाम से जम्मू कश्मीर इसमें. इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जम्मू में और कश्मीर में. So you see that on an average the orange is Jammu, the blue is Kashmir. जम्मू जो है, human क्या है? human से industrialization सांपुर वारेज़ाल. Have you heard about Bari Brahmana estate? That's a very big industrial estate and that contributes to maximum thing. ऐसे क्या that comparison है? तो जासी कोरा. But it's बहुत छोटा compared to that. So जम्मू की industrialization हमसे बहुत अच्छी है. मगर ये चुन again how was किया. It has a lot of logic and reason behind this. सबसे important ये है कि जम्मू is plain compared to Kashmir. ये मुझे rest of the country से easy connectivity. तो किसी भी बंदे के लिए जम्मू में unit set करना is way too profitable compared to Kashmir में करना. Ashunit raw material वाना पाचो, सड़क बांध का पाचो, जहाज उसके पे वाना नो. So industrialization for us geographically is basically a no-no. मतलब cause जो खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वैसी, like good things you can do. You say पाने है को zero economy create करे, तो circular economy, raw material भी यही produce करो, process भी यही पे करो, manufacture भी करो, label भी करो, advertise करो और फिर जाके rest of the world में भेजो. So this is the reason why जम्मू की जो hardcore manufacturing है वो हमसे बहुत strong है, ठीक है? और for any person ये में birds ना industrial SO your people from FCI के सुना है? Federation Chamber of Industries Commerce. तिमो का हेगली पात कुल तिमो यूनिट मगर ये यूनिट तिमो कश्मीर कुल तिम छबारे तिमन लॉसेस में चला एंड साइमल्टेनियस यूनिट कुल जेम में दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. सो ले देंगे हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग या हार्डकोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कश्मीर डिवीजन इज नॉट एज गुड एज जम्मू इज. सो अगेन व्हाइल सेटिंग अ बिजनेस वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. This is again the industrial employment, which again in line with the previous graph. जहाँ पे ज़्यादा industries होगी वहाँ पे industrial employment भी ज़्यादा होगी. So Jammu employs way more people in industrial sector than Kashmir does. कश्मीर में भी मैक्स इतना नंबर भी नहीं होता. कश्मीर में क्यों आ रहा है? ये कंस्ट्रक्शन की वजह से.
Again, that's a bit underpaid. Okay, this is a cool thing that I put in here. This is the housing and shelter security of Jammu and Kashmir. This is the houseless population as per the 2011 census. After that change home. So if you see that maximum people across Jammu Kashmir own their own homes. श्रीनगर में थोड़ी प्रॉब्लम है वो भी इस वजह से कि बाहर के लोग आते हैं तुमसे किराए रोजाना. So once as like from an economist perspective I tell you this thing, ये तो मकान सोचो ना मुफ्त रोजान, इससे आपकी इकोनॉमिक आउटकम बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. You go to Delhi, you go to UP, Bangalore, अक्सर क्या चुका था eviction चुका था, people are not able to pay their rent, मतलब साइड के बैठ सुनान. And then there is the problem of homelessness. Pachas no trend ram. Look ch basanan basam so andrum kana bagbanawan su hai mera naam Priya hai main van mein rehti hu. So no, basically they are economizing it, but basically it's a problem. A lot Priya is maybe has a good corporate job. She is doing it well, but maximum people are forced to live in their rickshaws and stuff. But कश्मीर में क्या होता है हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही मजे हैं. अच्छा सा मान लो कि बड़े-बड़े मकान बने हुए ACC मंज होता है बिंगा. बट ये देखिए जिसके सर पे रूफ होता है ना तेमस्टिन मैसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम टाइम साथ होता है. क्योंकि छत खाना ये आपके लिए बेसिक नेसेसिटीज है. जब छत है तो आपको सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करना है. सो यू अगेन दिस ट्रेंड मेक्स एन एवरेज कश्मीरी वे बेटर ऑफ देन एनी पर्सन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. रेंट की टेंशन तो पहले है ही नहीं. पहले बाप के घर में मुफ्त रहो, फिर ससुर जी के घर पे मुफ्त रहो, कल को अपना घर बनाओ. But this is a very good trend and we really need to be thankful for this as people living in Jammu Kashmir. We own our own resources and we are well off. This is the explanation. This is a very important slide. I want all of you students to take notice of. Like I just said, government in the 1950s was ice hollow factories and they actually did open the factories. Silk factory project with a unit full government and public sector. HMT Ghar, that was very famous once upon a time. Izzat ki baat hoti thi. I was a little kid, late 90s ki baat as much HMT Muslimism. It was a good thing, but what happened was peace dividend ki problem ho gayi. Government log peace and order maintain करना. They were not solely focused on unit पे. और इसमें क्या होता है अगर फैक्ट्री होती है ना like your father owns a factory, क्या है प्रॉब्लम के सोचो जल्दी पानी फर्स्ट करना गई प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, बॉडी होती है, बाहर शायद पता था हम मुझे कितना साइंस चिप हवा करना है. सो इट्स समथिंग लाइक दैट एज एन इनएफिशिएंसी. गवर्नमेंट लग गया पीस प्रोसेस में तुम साइन ही नहीं यार. ये एग्जीक्यूटिव इज दे फोकस टोटली ऑन देयर सैलरीज. ये यूनिट दे सिक. Most of the government units over time lost the game. Now look at this graph. This is such a cool graph. Percentage of firms, total firms just assume 100%. 1975 में 79% of the total firms across Jammu and Kashmir were owned by the state government. 1995 तक ये बस maximum में sick unit government थी मगर लोगों ने क्या किया था entrepreneurs like Mirza Magasting. If you look at your fathers, most of your fathers have their own business. The mobile course to start 75, 85, 95 इसी period में किया. 95 तक public sector, private sector इतना बढ़ गया था कि public sector contribution रुकू था 9%. Even 2015 में public sector जो वारिया lockout हुआ तो one, a lot of units have been declared sick. वारिया unit का remote sell to the private enterprises and eventually this is a graph. गवर्नमेंट पहले तो बहुत इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था, आपको नौकरी भी दे रहा था. तब यहाँ था अब ऐसे मनोनी सरकार नौकरी आता. नाउ लुक एट इट. अब इतने में गवर्नमेंट आपको कौन सी जॉब प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट के पास खुद तो इतने एंटरप्राइजेस है, पता कर इतना हल्ला फ्रंदला लेके जाए को था वो. सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. इसीलिए आप यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए शायद पोस्ट जॉब भी मुझे लगता है कम पड़ेगा अगले सालों में. गॉड कैसे इंसान सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर ने अब आगे थोड़े से एलिजिबल. This is the reason that government is not able to employ a lot of people in Jammu Kashmir. So it means that the game is changing and every one of us is supposed to become an entrepreneur in order to make our lives better. Again, this is a percentage over time. पहले central government की 1975 में यहाँ कितनी 15% firms जो जम्मू कश्मीर में थी वहाँ central government थी. कैसी थी उन्हें boost करना. They thought it was fine. They had some units here. It has drastically come down to 1.96%. Government का तो बिल्कुल ही नीचे आ गया है. And then I'll show you the private sector. तुम चला के target like they don't matter. Okay, it's the graphical presentation of the same thing that I just explained. See? Again, I will go back here. This is क्या actually जो government owned इसमें शायद कुछ graphical difference हो गया है. One second.
2015 में क्या हो गया था? 2015 में your major chunk of the firms were already placed in the private sector. Entrepreneurs partnership was. So if the firms are, if the businesses, industrial units are Jammu Kashmir was over the period of time, by 2015 it was individual centric movement. Why this happened? Because 70s, 80s, 90s में जो वो हो रहा ना instability. लोगों ने भी समझ कि गवर्नमेंट ना हेल्प कैसे एम्प्लॉय करे थी एंड एज पीपल एज फैमिली मेंबर्स वी ऑलवेज हैव द रिस्पांसिबिलिटी कि आज जो घर के खतर प्रोवाइड करूं, यू नो, अ फादर वुड ऑलवेज वांट टू हैव पापा, नोबडी वांट्स हिज फैमिली टू स्टार्व. सो इससे क्या हुआ, ये बना समझ सरकार इतने एम्प्लॉयमेंट दे केप्ट ऑन एम्प्लॉयिंग देमसेल्व्स और इसी चक्कर में क्या हुआ, सार्डली लाकेट यूनिट खोले और इन द प्रोसेस जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल सिनेरियो चेंज फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये था गवर्नमेंट को नहीं शुरू की बुद्धि मोटे नौकरी कर रही थी ग्रेजुएट. दीस वर द काइंड ऑफ यूनिट्स दे वर रनिंग. वुडन प्रोडक्ट से बहुत बनाते थे, सिल्क के बहुत बनाते थे. यू नो द फर्स्ट टू आर बेसिकली हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटकम्स. तो जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था यस pretty मुझे सर इकोनॉमिक पॉलिसी as one of us ये क्या सोचना this was the vision. Is one also outcome. Use the national market as much as you know. Use international market as much as you know. And once you sell your output in international market, you have balance of payment. You have surplus in dollar terms. और उससे इसने assume किया था कि बांध हो, टेक्नोलॉजी बांध हो, एजुकेशन, a lot of things. So possibly अगर नया कश्मीर मैनिफेस्टो सक्सेसफुल होता तो आज हम सब लोग बहुत एडवांस होते. So यूसुत्रा एनवायरनमेंट डेवलपमेंटल लागू स्टैग्नेट हुई इकोनॉमी 30 साल तक, वो नहीं होता. A lot of change would have been there. Manufacturing को armaments वो सरकार मानुस खर्च करना to be on the defensive side. Okay, these are other things. You know, यूज वाले ज़्यादा ये तुम लोगों ने देखा है flour mills. सरकारी घट मिलास वाले ज़्यादा अपनी उतनी होती है. So this was for people's benefit. That was for export thing, and this was again for the Indian market. So ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टो था. इन्होंने बहुत अच्छी चीजें सोची थी कि बस लोकल इकोनॉमी से ग्रो करा, नेशनल इकोनॉमी से ट्रेड करा, तो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक्सचेंज करा एंड मेकिंग डॉलर्स आउट ऑफ दैट. But this thing didn't work out eventually. ये change हो गया. These are the other things. And if you look at the 2015 thing, सारी चीजें जो change हुई. Private sector में सबसे ज़्यादा जो अभी आप firms देखेंगे ना, so there is manufacturing of pasteurized milks and other things. Your cattle feed, you have थोड़ा blended silk, all these things. Now this is the vision of an average Kashmiri person. ये क्या है, ये कैटल फीड वगैरह बनावा निमन बात हो इसका कुछ ना. अभी भी जब कोई बोलता है ना वो बोलता हूँ वो क्या चुचान गत पेटे में आजकल वाले ट्रेंड चला. दे थिंक कि गामन में वाला चुमट वाला हम बनाओ गत पेटिच फैक्ट्री एंड देन आई विल सेल इट टू देम. सो ये कुछ वैसा विजन था. ये हमारा फुटमुट विजन. इसको ये बेटर लग रहा था, इसको वो बेटर लग रहा था, तो कुल मिला के जो बना बहुत मिक्स्ड बना. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन टू इन ओरिएंटेशन ये बहुत रैंडम है. मेरे एक फ्रेंड को लगा प्लास्टिक रिसाइकल करना अच्छा है इंटर प्लास्टिक फॉर्म बिकॉज बासो बुक खोल ली है गत फैक्ट्री खोलते हैं कॉर्पोरेशन. तो डायरेक्शन अभी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई नहीं है. जबकि आप ये वाला देखेंगे ना, ये क्लियर डायरेक्शन, एक्सपोर्ट डायरेक्शन, नेशनल मार्केट डायरेक्शन, लोकल मार्केट डायरेक्शन. सो हमारा जो अभी का इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इट्स लाइक वेरी वीक. आप चीजें इधर उधर से बना रहे हैं, आप नहीं सोच समझ के बना रहे हैं. आपके पास फॉरेन सरप्लस नहीं है, आप नेशनल मार्केट को टारगेट भी कर पा रहे हो, लोकली भी आप कंज्यूमर स्टेट ये पाना जरूरत है का पूर्ण करे. Even the corrugation thing, you know, you miss, like most of you might be from north and south. चूट का कुछ शास बना, गत्रिस जाबस में corrugation box. लासीपुरा में बहुत units हैं, खम्बो में बहुत units हैं, but still 60% of the corrugation boxes still come from Punjab and other places, and they are cheaper than our corrugation boxes. Even when we are industrializing in one single thing, Ashton Sudhya का 100% produce करें, you know, उसके लिए भी पंजाब से depend रहना पड़ता है. So again, we have a lot of scope to at least cater to the things that we need ourselves. This is the number of state government employees. Which usually, you know, trend बहुत usually what you expect from the नया कश्मीर मैनिफेस्टो because of straight line आसे. लेकिन ये बहुत लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पाया over the period of time. और ये जो 18-19 वाला है ना, ये भी वो बढ़ती हुई है जिसमें उड़ान था. So it's not any sustainable thing. Government is showing us कि this वाले employment मगर it's sustainable employment किया. ये थोड़ी अच्छी employment थी जो थोड़ी बड़ी उनकी नौकरी हो सिवान और लगामेंट देती थी बीच में मुफ्ती सईद देता था. It's that kind of thing. So it's not really a good thing, which is very unstable graph. This is comparatively a stable graph. This is a growth of self-employment. Look how कितने लोग पाने businesses खोलें तो कितने they can grow stable over the time. So if you see 2005 से ही मैं दिखा रही हूँ, it has steadily increased over the period of time.
30-40 में डिक्लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सैलाब आया था तो नए यूनिट्स नहीं बने थे, बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग self employment as Kashmir was a rising trend, and it's an indication for all of us that government will not be provide employment even to 1% of us. It means that we have to learn our skill, we have to specialize one person in one food thing and then process it itna अच्छे से, market it itna अच्छे से, and then sell it eventually. So these are our signals. This is a change in trend. I just discussed this, so that is it on this thing. Do we have any questions? Yes, ma'am. Sure. One lecture was, sorry to say, one lecture was mostly what has you have decided, you have discussed about land mass or geographical distribution of the cost man. But under the banner, what is the title of the workshop? It is sustainable, it is food-based management. Right. How to achieve sustainable goals. So I think you should have to talk about what are the sustainable food-based management initiatives have been taken or should be taken. Right, you're right. But what I discussed with Sir was the fact that everybody in this room is going to operate in Jammu and Kashmir economy. So we wanted to put a lecture on, like, you should know did you know these things before? So we need to know our pluses and minuses. That was the reason we had this study. Data has been we have stated about it in every subject. But well, that was what we discussed. New initiatives about the food-based we have never seen. But that could be only, I can't come and directly give that. I don't need to discuss these things with everybody. Mostly value addition thing. To waste management, we have not actually a single point. Listen, Munir actually I talked to Madam last time. We wanted to make you understand the overall economy of the Jammu and Kashmir. Be it any field. See, we need to understand each and every field. Right? So, you have a lot more lectures on the waste valorization and all. That, like I said, we have epistomics, we have element hallows, water, so that have been already discussed. Yes. But most important, to be very frank, see, I am here. Now listen, I am here, this is my second job, I have been to many places, but I was not doing these things, to be very frank. And I could have done that also, we need to start from somewhere. As students or as, when we are not into this job, we actually think that our subject is the only thing. But अभी आपको पता है मुझे सबसे कमी किस चीज़ की लग रही है? अभी ये जो सारा ट्रेंड चेंज हुआ, this is new education policy जो हमारी है, तो we have to be interdisciplinary. मैडम के साथ अभी हम लंच के बाद ही बात कर रहे थे कि we have to be interdisciplinary अगर हमें survive करना है. So we must know each and everything about our economy. These are very important. So in that perspective, we could do a lecture, but we need to know the I am saying the data should be related to what initiatives food-based management have been initiated. I am telling you, this was my suggestion not to discuss about this food, waste, just to understand the whole economy. If you wish, we can make you understand. I can arrange one more lecture on, the data on food waste. But this was my suggestion, madam. Set up in the question, sir. Sorry? Sir, I am talking what industries have been set up in the implementation about food waste or other wastes. Okay, these were. No, he is right in a way, but that's a bit of an advanced lecture. That would be like my fourth or fifth lecture. Before that, after this, I need to discuss the industrial policy. क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं पता होंगी, I can't, as an economics person, come and jump to food science people, with these things. So we need to start with these things. For that, we can arrange a lecture on that separately on food waste management or what are the market challenges for that. But it was my suggestion to know about our economy because we don't know actually हमारी economy कहाँ है, where are we standing? It's not only food. It's about other things as well. So. Second one. So see, sorry, what's your name? Munir. So Munir, basically, since this is a kind of a research orientation thing that we are doing, it's always a step-by-step process. I, as an economist, cannot come and fuel you guys with a lot of techniques. Like, I know a lot of things about your thing, but we need to start from basics. I would still take 2 more lectures before coming to what you were saying. ऐसे नहीं होता, you don't jump, you
familiarize people in work. See, I have a super specialization in industrialization, but I can't fill your heads with the things जो समझ नहीं आएंगी. So we need to start from the very basics in order to reach there. But if you want data about that, I have some papers and all. I'll be happy to share with sir. You can take from sir. Anyways, the second part is about the industrial policy. Again, it's for the self-employment kind of a thing. If you guys want to excel in one thing, create something and market it, you will have to see कि government कौन सी चीजों को incentivize कर रही है और कौन सी चीजों को disincentivize कर रही है. So after 2019, the government of India did some research and they came up with the plus and minus sectors of Jammu Kashmir economy. जो उनको लगता है grow करेंगे, करने चाहिए, जो grow नहीं करेंगे. So based on that, they have devised this industrial policy. So like I already mentioned कि agriculture के industry में ये difference कि industry में value addition बहुत ज़्यादा रहता है. Agriculture में जो activity आप 2 घंटे करेंगे, maybe it would pay you 500 rupees. Industry में वही 2 घंटे would pay you 5,000 rupees. आज जो value addition very strong रहता है. So globally speaking, developed world की बात करके, Russia वगैरह second world की बात करके और third world की बात करके, the most sustainable channel to development is industrialization. When again, पहले स्लाइड में जोशिया, there are 4 types of industrialization जम्मू कश्मीर के केस में. उन चारों में से कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आप इंडस्ट्रियल हेड के अंडर ही आएंगे और जो भी वैल्यू एडिशन आप उसमें करेंगे आपका रिटर्न बहुत ज्यादा होने वाला है. सो फॉर एग्जांपल शी हैज अ बैकयार्ड, ये वहां पे लेवेंडर उगा रही है और फूल को भेजेंगी तो थोड़े पैसे कमाएंगी. थोड़ी सी पैकेजिंग करेंगी, ऑर्नामेंटल पैकेजिंग करेंगे, थोड़ा ज्यादा कमाएंगे. वैल्यू एडिशन करो, चीजों को अलग अलग करो एंड मल्टीप्लाई बाय 5-6 तो हो ही जाएगा आपकी इनकम की. So that's why industrialization is so important, and that is why government is creating all these policies and schemes for us to specialize in some of the other kind of industries so that हमारा जो outcome है वो dramatically increase हो जाएगा. ठीक है? And again, industrialization leads to structural transformation. Very important for all of you to understand. Does anyone know what structural transformation is? No? Structural transformation is a process that we all go through as a society. It means हर 30-40 साल में आपकी सोच में बदलाव आता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव आता है, आपकी हैबिट्स में बदलाव आता है. So now in Bidwa, they were of a different bent of mind, lived in different houses, consumed different food. And same is with us. And industrialization is something जो हमें ऐसा structural transformation create करता है, जिससे उन living standard increase होगा सन. So if you compare and backdate, your parents had a better living standard than your grandparents. You have a better living standard than your parents. And I know that my son is going to have a better living standard than me. आपको बना structural transformation और एक sustainable structural transformation हमेशा आपके industrial growth के proportional होता है. जितना अच्छा strong आपका industrial growth होगा, उतनी आपकी structural transformation होगी. And this is important because everybody wants a better life after all. ठीक है? And modernization और urbanization भी इसी से आती है. And I think most of the people do want to modernize. One so your Spanish definition मानो modernize. Modernization या Western Palangan. Modernization basically means an advancement in your thinking processes, a more better understanding of your outputs, and above all, modernization is related to information symmetry. ये जैसे इंसान से ज़्यादा information आसे तो उतना समझे सुपन आसपास is better, उतने अच्छे वो फैसले लेगा और उतनी अच्छी उसकी जिंदगी बनेगी. So it's that kind of a thing where modernization relates to a better life force outcome. ठीक है? So this is the document, like, which is a very important document for all of us who live in Jammu Kashmir but have barely any idea. This is the industrial policy of Jammu and Kashmir. It's effect from 1st April 2021 and it's going to be there till 2030. Give this factory set karo, give this government subsidies, they are all going to be under this head. So again, this is a very important document. This is a little bit of a history of budget industrial policy Jammu Kashmir over time. 95 में major आई थी, 98, 2004 and 16. This was a very big one. अगर तुम पूछो ना या चाक थोड़ा relationship. जब कश्मीर में fragility आई, look is unstable, anarchy और थोड़ा youth was not sure what I want to do. तब government ने एक नई industrial policy बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग employ हो और वो productive channels में अपना output दे सके. So it has that kind of a correlation. 2016 के बाद a major industrial policy that the government gave with a lot of money came in 2021, which is going to be there up to 2030. which have aim use government to वाले ज़्यादा कोशिश करान कि गैर से मीच करूँ
to create a sustainable, balanced, equitable, environment-friendly, progressive and competitive industrial environment in Jammu and Kashmir. This environment-friendly is a very important theme of this. एक तो ये कि इनको sustainable development goals attain करना है by 2030 और industrial policy भी तभी तक की है. And another important thing is Jammu Kashmir is mountainous. बेसिकली हमारा फ्रेजिल इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो सारा इकोसिस्टम इधर उधर होता है. So you know Professor Shakil Romshu, the Vice Chancellor of the University, तो जो ना हर जगह ही बना because he is an environmentalist, you know SDGs and fragile economy and all. तो ले के जम्मू कश्मीर का जो environment है ना ये जो वारिया sensitive. अगर इसको hardcore manufacturing कर रहा हो iron steel kind of a thing, हमारा यहाँ सारा balance ही बिगड़ जाएगा. पानी खराब हुआ, पेड़ मर जाएंगे, things like that. अगर इसको industrialization very tricky. You can be good food processors, you can have food processing industries, but you can't have iron and steel industries here. It's marosari time se kaç asıl havas adır. So this is at the core of our new industrial policy, which is that it needs to be environment friendly. Have you heard about DPIIT? A very important organization. It's called the Department for Promotion of Industry and International Trade. It's a Government of India Ministry of Industries की ये official body है. Government of India को आप करोड़ बोध अरबों रुपए दीवान to put it in Jammu and Kashmir and productive channels. So हमारे जो भी special packages आते हैं, जो Prime Minister हमें schemes देते हैं, जो industrial policy में हमारे पास पैसा आता है हिंदुस्तान से, वो सारा DPIIT से आता है. I don't know if you know this, DPIIT ने अभी IUST को एक बहुत बड़ी funding दी है जहाँ पे हम startup start कर रहे हैं. So if any one of you has some good idea, you can come back to IUST, including sir and me. So we can actually we give a very good funding there. Seed में हम ये funding करते हैं. First issue ना council food tech idea to ease out. ठीक है Parvez sir is really cool with these things. So they have given us a lot of money. They put on money in different ventures to industrialize Jammu and Kashmir in a better and sustainable manner. Okay, so have you heard about MSMEs? Micro, small to medium enterprises क्या है? ये छोटी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है. ये ट्रेंड कस्टमर निजासन बेस्ड ऑन कैपिटल मशीनरी का वैल्यू कितना है, बेस्ड ऑन टर्नओवर कितना है. आप माइक्रो आसान इन लाख 5 करोड़ था एंड देन योर मीडियम एंड देन योर स्मॉल. इसके बाद आती है लार्ज यूनिट्स, फिर आती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. जो मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बोला था ना कि जम्मू कश्मीर से एगैलिटेरियन सोसाइटी, साढ़े 4 इनकम. One of the reasons behind that is that हमारे यहाँ large units नहीं है, हमारे यहाँ MNCs नहीं है. All we have got is micro, small and medium enterprises. आप मस्त क्या चाहते हैं? आप वहाँ पर entrepreneur आसान, you should 5-6 मानों से employ करान, and then ये सब लोग financially well off होते हैं. My PhD was on industrialization process in Jammu and Kashmir. तो जो लासीपोरा का इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, मैं उनके साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ. अच्छा ऐसे लड़के थे, little girls, a lot of boys. They want to pull with unit. They make so good money. They spend पास industrialists बना, you know. हालांकि उनके पास माइक्रो यूनिट्स है, पर कहने का मतलब ये है उनकी जिंदगी अच्छी हो गई है, उनके एम्प्लॉयज की लाइफ बहुत अच्छी हो गई है. A lot of units, new units that are in Lasipora, तिमची ये industrial policy through तिम set करान. तिमची तिम लड़के ये गुड मिल का नजर फैक्ट्री में मस्त है ये नाम करान. खुद स्किल सीखा, खुद अपना माइक्रो यूनिट खोला. Again, another reason why Kashmir is so egalitarian. Everybody gets a chance to become well off, provided आप थोड़ा effort लगाए. So कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर में 25,000 operational MSMEs है. अगर ये 5 गर्म करना ना employ, it means that बहुत बड़ा fraction of population ऐसा है हमारे यहाँ indirectly या indirectly पाने असल income से ज़मान through MSMEs. It contributes 8% of the gross state domestic product, which is a very good thing. You know, it's a very good number, and it contributes 60% of total investment in Jammu and Kashmir. It means that any one of you who has a very good idea, किसी के पास कोई अच्छा prototype है, तो ये कि वारे असल पे तक micro unit set करे, गारी की नो वर्ड पहुँच दिया DPIIT, IUST, SKUAST, क्योंकि हम सबके पास incubation centers हैं, and you can actually in 5-6 years be खतरनाक तरीके से independent. ठीक है? Just remember this thing. This is a wonderful feature of our economy, and again a wonderful thing because Government of India is giving us a lot of money for this. जम्मू कश्मीर को focally इस चीज के लिए बहुत पैसा मिलता है. So anyone of you who is interested in creating, you know, like I was talking to you guys about making one product which is like super cool and you can actually market it, commercialize it. This is a way. तो जो micro unit खोलो ना, you can actually do wonderful with this. अच्छा बीच में मुझे एक चीज याद आई. Have you seen these girls and boys on Instagram who sell their stuff? पहले Instagram पे दोस्तों को भेजते हैं, फिर बाकी लोगों को भेजते हैं, फिर वो यूनिट खोलते हैं, फिर रजिस्टर करते हैं, फिर माइक्रो यूनिट बनते हैं.
5-6 साल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मीडियम यूनिट बनता है और एंड में स्मॉल यूनिट भी बनता है. So this is how in Kashmir you have the opportunity to actually, you know, target your friends and neighbors and then create your initial capital and actually start your own enterprise. So this is the thing about our economy. Department of Industries and Commerce, Government of J&K chart overlook karar. Huh. See, look at this. These are the potential sectors that our government has identified. Potential sectors. इसके बाद positive, negative अलग है. यहाँ पर this various scope जो where each one of us can thrive. And based on this industrial policy, बहुत ज़्यादा subsidies और schemes मिल रही है आपको units set करने के लिए. So the most potential unit, as per the government of J&K, is your food processing unit. So it means that technically तो I must remain unemployed in the next 5 years. अगर तो ये चीज़ शो पाए तो I think when policy in सारी benefits harness करें and you can actually successfully create this one product which you can specialize in. And then your pharmaceuticals that I think is again somehow related to you guys. You know, you can do something about it. And then IT sector में क्या हो रहा है? IT जो services sectors है, रंग रेट वगैरह से आप यूनिट खोल रहे हैं, वहाँ पे आप अमेरिका की कंपनी को आउटसोर्स करके ला रहे हैं, यू आर एम्प्लॉइंग पीपल. टूरिज्म तो है ही है, हेल्थ केयर इनका फोकल सेक्टर उसके बाद आ गया जब इन्होंने एम्स वगैरह बनाया, श्री माता वैष्णो देवी का कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया एंड पद दोपीमो के हेल्थ केयर का सोचो. Yes sir. If we take scrap recycle industry, in what sector it will buy in these? I don't know. This is exactly what is in the industrial policy. जो गवर्नमेंट यहाँ पे थी स्क्रैप सेक्टर की बात ही कर रहा है. I mean to see in the last slides and in this area. Sorry, what? I would want to say that your lecture should be related to this with this man. Yeah, you're schooling me a lot, darling, but that's for a later class. Again, kya मैं तो ये है पता चाहूँगी government है जो food processing कर होती है ना, I'll come to subsidies and all. How will I just jump? So first recycling unit full, recycling waste से खर swap हो this like. No, Manvi, that's a different sector altogether. Hey, Yes, we'll come to that again. Munir sahab, see, there are policies right. अभी जो हमारा है ना ये वेस्ट मैनेजमेंट धीरे-धीरे पॉलिसी तैयार होती अभी नहीं है, there is no direct policy on that. कोई बात नहीं, चल बात ही हो रही है. कोई बात नहीं, we can come to that later, but it's a step-wise process. We need to understand the industrial policy first. How would you jump at something if you don't know what percentage of subsidy you have? You need to calm down. आपने again पता नहीं मैं बार-बार क्यों I'm coming to Donkey movie. उसमें भी ना you just want to come to end. You don't come to ends. You need to come in a step-wise manner, Munir. I think everybody else agrees with this thing. No, we can't just jump. Have patience. It's a प्यार workshop की साइड बस से क्या है शक्ल. Anyways, about the healthcare sector, a very good thing is that healthcare में कुछ changes हो रही है policy में. Healthcare चीज़ चाहत तिथन जायन set करूँ units where there is aesthetic beauty. बीमार नफर ये अस्पताल में he should be able to see some aesthetic things. So now they are coming to aesthetic healthcare and that is where healthcare sector is getting a lot of boost for Jammu Kashmir because it's set in a scenic beauty, hawa chasal and things like that. So that's why government is seeing it as a potential sector. Education की कोई अभी पॉलिसी नहीं बनाई है, एक है but it's there. And hybrid raw silk and woolen fabrics is again back to Naya Kashmir manifesto where you want to earn exports out of this. तो इसीलिए इन्होंने इसको potential sector में रखा है. These are the 9 identified focal sector that government is saying कि इसमें खोलोगे, इसके अंदर जो भी heads आ रहे हैं, तो government is actually going to give a lot of subsidies. So you see that your agriculture and food processing is in top 5, it's on number 3, and then herbal and medicinal plant it again relates to you, and healthcare pharmaceuticals भी आ रहा है, and milk, poultry and wool products is also there. So I'll come to the slides later. इसमें बहुत subsidies मिल रही हैं, ठीक है? बहुत कम पैसों में ये units set हो रहे हैं. And these are other things. Film tourism के लिए एक अलग policy बनाई है इन्होंने, you know, you have Jammu Kashmir film tourism policy. उसमें they are again giving you a lot of money अगर आप कोई ऐसा venture खोल रहे हैं जो film tourism के काम आएगा. So that's a very cool thing that's happening. Your horticulture and post-harvest management is there. And then Mulberry again for exporting renewable energy because we have a lot of water resources and you can create your hydropower sources. और 6 ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये जो गवर्नमेंट हमेशा वासु एनेक्स जेट में होता है कि जब गवर्नमेंट को अपनी जरूरत के हिसाब से जो लगेगा उस सेक्टर को ये अंदर या बाहर कर सकते हैं. These are called the positive list industries. ये वो इंडस्ट्रीज है अगर आप खोलेंगे तो इसमें सब्सिडीज मैक्सिमम मिलेंगी, मैक्सिमम गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा. So you see that your tourism, hospitality, healthcare,
R&D and all these things come in your positive listing. अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी खोलेंगे ना, more than 50% आपका सब्सिडी रहेगा. These are negative listings. पहले तो गवर्नमेंट आपको ये खोलने नहीं देगा, खोला तो गवर्नमेंट आपके रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. Tobacco not allowed obviously because of health reasons. Number 3, plastic carry bags. Because Jammu and Kashmir economy is a fragile economy, environmental issue है, it's not letting you create your plastic bags here. अगर तुम ना तुम ग्रहण लिफाफ वगैरह तुम बैन, वो जब भी आते हैं illegal तरीके से rest of the country से ही आते हैं. So again, like the guy was saying, you cannot see anything about the recycling क्योंकि वो गवर्नमेंट के फोकस में ही अभी नहीं है. गवर्नमेंट एंडोर्स ही नहीं किसी प्लास्टिक चीज को कर रही है, तो recycling is just outside the domain at the moment. Power generation above 10 megawatts. This is a very tricky thing. Can you guess why? अगर कोई सिचु ना आगे कोल पाका, he can generate his own power. Why is government banning this? Why is it a negative list sector? Can you guess? It's a very tricky government kind of a thing. Because this is the thing that gives government the maximum revenue. ये ना तनाव पावर पाचा सटावान 10 में जो ड्रामा चौसन. So अगर इस मानो पावर करो generate and maximum rural people have some of the other access to coal. You know तुम लागत है तुम so what's that called? Turbine and things. So it's prohibited. कोई भी 10 megawatt से ज़्यादा power generate करेगा, it's not allowed legally. So it's there. और gold door is like तुम song chart बनाओगे क्योंकि there is a thing कि it's believed that Kashmir has a lot of such reserves. So government is not allowing you to go into this because हम करेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी. And then you have molluscs and marbles and granite. So these are all basically the things that the government wants to keep for itself. Issue government to fund on revenue generation जिसमें वो हमें as individuals नहीं जाने दे रहा है. So for any one of you to set a unit, you need some basic eligibilities. What I used to तो अगर कोई innovators को prototype register करना है, उसके बाद government की agency कोई भी होता है ना, DIC या कहीं district industrial center or there, you need to go there, you need to register your unit. These are the main things. Okay, existing का छोड़ो. And then if you are trying to set a negative list, तो पहले आपको registration नहीं मिलेगी, उसके बाद आप इस policy के अंदर आपको कोई subsidy नहीं मिलेगी. So you will be impoverished. हाँ. So again, if you are setting any unit, any food processing unit or thing under this thing, पहले तो आपको 100% exemption मिलेगा stamp duty से. काफ पत्री उसके government industrial estate में government जमीन आपको lease पे देती है, ठीक है? So usually उस transaction के लिए घर जो ना जमीन कनाने है वहाँ उसमें बहुत पैसा जाता है, you know, पाँच सुजान आना नाव कराना and things like that. No, it's happening here in Kashmir. जब मैं जो बात ना कश्मीर की modern जिनसे sorry जमीन करना जाना नहीं नाव, but basically the thing is कि उसमें पैसा कम लगता है. Recently a lot of things were transferred to my mother's name, you know, my father got impoverished to save some money. Anyway, so there is 100%, तो आपका अच्छा खासा पैसा बच रहा है अगर आप इनमें से कोई सेक्टर में जा रहे हैं. So you are not supposed to pay anything आपके land transaction में. उसके बाद जो भी आपको registration fee होता है ना कोर्ट पे ये छुपा रहे ज़्यादा आसान. आपके मिला होता है 100% exemption, ये छुपे मुक्ति करण, ठीक है? If you set any of the positive units from the list by 2030. Quality certificates होती है तुम लोगों के लिए ज़्यादा होती है ना, food quality certificates, cleanliness, environment, all those things. उसमें 30% जो है सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट विल पे 30% ऑफ योर फीस. कोई भी यूनिट को आप ऑटोमेट कर रहे हैं ना, जैसे वो सर दिखा रहे थे, डू इंडियन मशीन मस्ट बरे, तो आपसे चूज करो द यूनिट विच वाज यूजिंग द अर्थ प्रोसेस. जब वो अपग्रेड करेगा मशीन पे, तो जितनी भी मशीन लगेगी 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ उसमें से 25% कौन पे करेगा? गवर्नमेंट. सो अगेन अ बिग इंसेंटिव. कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाएंगे क्योंकि फ्रेजाइल इकोनॉमी है, तो 60% आपको क्या मिल रहा है? 60% सब्सिडी उसमें. सो कोई डिवाइस अगर 1 लाख रुपए का है तो आपको 40,000 में वो मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर यूनिट. ओके, सो एनी ग्रीन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव लगाएंगे तो 50% सब्सिडी मिलेगी. पहले एमएसएमईज का जो क्राइटेरिया था ना, वो सिर्फ कैपिटल पे थे, मगर वहां था टर्नओवर पे, तो ये टर्नओवर पे भी आपको इंसेंटिव दे रहा है. आप अपने यूनिट पे जितना टर्नओवर इंक्रीज करेंगे ना, उतना गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगा. यू नो, दिस इज अ वेरी कूल थिंग. दे वांट यू टू सेट योर ओन यूनिट्स टू बी इंडिपेंडेंट. व्हाई? बिकॉज दे नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गिव यू जॉब्स इन द पब्लिक सेक्टर. दैट्स व्हाई दीस इंसेंटिव्स. And the last thing is so cool, they are giving you up to 100% GST reimbursement for up to 10 years. इसका नहीं हुआ है लॉकवुड वासन, बट फॉर अ माइक्रो यूनिट इट गोज इन करोर्स. तो सोचो ये आपको वापस मिल रहा है, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. मार्केटिंग सपोर्ट भी गवर्नमेंट आपको बहुत देगा. ये दिया होता है ट्रेड फेयर कराएगा आपके लिए, होते हैं ना, अगर देखते हैं
ट्रेड फेयर्स गवर्नमेंट कश्मीर में करता है, नेशनली करते हैं, इंटरनेशनली करते हैं। वो जो हम है ना, हम इज आवर काइंड ऑफ ब्रांड गोइंग ऑन दीस डेज, या पश्मिकार। So Ashtanasa fine because we are so small people. ये जो big giants होते हैं ना, Prambus, Bambus, इस किस्म के लोग, they know how to harness it. Actually, maximum फायदे तो मिलते हैं। Why? Because people like you and me do not know what this industrial policy holds for us. Ashtidapan, as क्या फायदे चुन stuff. But basically, we need to know all these things in order to harness these benefits out of this. अगर government काम करें किस unit set करना positive sector में, अभी मुझे लगता है 25-30 लाख में तुम लोगों को 2-3 करोड़ का काम निकल जाएगा। You know, इतनी इसमें incentivization है। So gem portal वगैरह it's there. There was another thing. हाँ, और इन्होंने एक industrial grievance forum create की है। So anybody having any problem, आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, आपको कहीं पे कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, 24 आवर्स में गवर्नमेंट ने एक सिंगल क्लियरेंस विंडो बनाई है। If you've seen this, 24 hours में you would be sorted out in this case, right? So these are the main highlights of the industrial policy. You can actually be independent. Yachike lacunas there, you know, a lot of things are there. Why? Because with the industrial policies, na DPIIT banawali jo aam questions prasankhya. They'll have Prambhu on board, they'll have Khabar on board, they'll have some other big shot on board. They won't have a small micro entrepreneur on board. So usi kya hota hai? Them is which are such problems and as such reflect the sankhya. So because of that, we have these kind of lacunas, but nevertheless we can overcome them. Okay. Again, this is something that the government is doing. It's a top 8 other schemes जो गवर्नमेंट अभी हमारे लोगों के लिए रख रहा है। So you have a new central sector scheme. इसमें जो आपका सेक्टोरल है ना, ये फूड टेक वाला या जो जीरो इकोनॉमी है, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। You can actually earn a lot from them. IT is for the IT graduates. जो नंबर 3 है, आपका ट्रिपनाई वो हमारे पॉलिसीज मगर ये गए फेल। Why? Because if you use average सूचना भी जो यूसुफ ने मौजूद है मिस्टर सूचना तो सब इंश्योर कैसे करूं because it's giving him a lot of less money क्योंकि बहुत सारे mediators है, PROFFESOR and things. So to end those problems, we have this policy of 2020, and then we have the affordable housing. This is mostly for Jammu and a little bit for Srinagar क्योंकि इन्हीं दो जगहों में housing crisis है, बाकी जगह से ऐसा housing crisis नहीं है। And to avoid that for future, the government is trying to give everybody a roof. क्या इसके आंसर थ्रू दिस टू egalitarian nature बरकरार, everybody will have a roof for next 5 to 7 generations. You have the poultry policy, which is a dedicated policy if any one of you wants to set a poultry unit, and then industrial policy we just discussed, and land allotment city one, and then you have the film policy. It's again a very cool thing, but not for this class. So ले देखे, the moral of the story is कि we all need to be educated, of course. We all need to be skilled. We all need to have our BTechs and MTechs and PhDs, especially for people from this field. But again, you need to come up with your own innovation so that you are self-employed. क्या अगर इस विंग के employment थानो ना public sector, that's not going to happen. पास तो हिंदुस्तान राष्ट्र या you know any other Asian or American or anywhere else you have to look for a job. But if you want to be in Kashmir, there are a lot of incentives you can actually harness with little money, and you can actually be contributing to your own self and to your own economy. This way, it's going to be a zero economy when it comes to our skills, our outcomes, and our own economy. So you really need to change your vision. We all need to do. I need to do it for myself, for my son, for sir's son, because they are not going to land up on this position. It's not going to be possible in the future. So that's all that I've been trying to convey from then to now. Thank you. Students want to interact? Do you want to have a word or something? Any question? Who has the unit set in here? Okay. बताएं. Maybe they need to process the information, it's something like business idea. Thank you so much, ma'am. Hanji, so we have First of all, because of the reason that you waited so long, yes. Actually, there is so much information and we have to be handling for all this. एक कॉमन लीव है, फॉर एग्जाम्पल हमें भी नहीं पता था कि सब कुछ जो कि आपने बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह है, तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा इन सारी पॉलिसीज के बारे में? तो अगर कोई साइट्स वगैरह है जहाँ हम ये सारे पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं? Yeah, there are a lot of websites. जो DIC है ना, District Industrial Corporation या Directorate of Industries है, you just Google industrial policies in Jammu and Kashmir. You can find a lot of them. But अगर कोई film policy which हो ना, तो ये बने तो आप मस्त successful entrepreneur जितने incentives है, तुम बस छान ले, vanity vans and stuff. It's really good. So just Google
और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन जम्मू कश्मीर, टूरिज्म पॉलिसी, वहाँ से सारा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है? इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. बट ये कि हमारी सोसाइटी में इतनी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री आजकल पाई आसान और जितना PhDs पाते तो एक नौकरी पाते नो प्रोटोटाइप तो broken. So you really, when I was a kid, you check my Facebook sometime, you know, my Facebook ID is DR.MEHEK, DHAER. I was very good at making clothes. मैं बाबीज के इतने अच्छे clothes बनाती थी ना. I was sure कि बड़े होके I'll have a fashion house. मगर बोला जिसना मैं पार्टनर्स पर मैं वो प्रोफेसर बनना चाहूँ. So I crazy worked for 10-12 years to become an assistant professor. And I'm sure I tell you this with guarantee. अगर मैं सो fashion house business ऐसा ना करूँ, I was very creative. मैं आज समय जिस खबर भूत अबोर्ड ना शेलाल डिजाइनर करके बंदे शायद मेरे को होती. बट कहने का मतलब ये है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकली वी थिंक जॉब इज गुड, we go with that bit. But please Google yourself, help yourselves, be you, search, you'll find so many cool things, you know. और women के लिए there are a lot of more incentives. मुझे नहीं पता था यहाँ ज़्यादा women audience है, so I would have shaped it. Students पे actually काफी ज़्यादा यहाँ female है. That's pretty cool. It's a very good thing. But I would have wanted it otherwise. So there are a lot of incentives for women. Just Google it, you will find a lot of information. Any other student? Ma'am, thank you so much. First of all, you waited for so long for. I enjoyed the lecture. Okay, thank you. Number one, see, last year only government policy बना रहे थे, ठीक है, export policy. मैं भी एक member था. So we were all there. उनकी मीटिंग हमारी पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे हुई, फिर हमारा JKHPMC का जो वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनके साथ हुई. अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कमर्शियल सेक्रेटरी अतुल डोलू जी जो है अभी ये हमारे चीफ सेक्रेटरी भी है, वहाँ पे हमने, ठीक है, उनके पास प्रेजेंट किया. अल्टीमेटली दैट गोज टू द गवर्नमेंट. एक चीज हमें लगा, मुझे उसमें इकोनॉमिक्स सीखनी पड़ी. आई वाज एसोसिएटेड विद आवर डीन प्रोफेसर शिवराम वानी साहब, ही इज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट. मतलब सबसे पहले मुझे इकोनॉमिक्स समझनी पड़ी, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसी हम बनाते हैं, ठीक है, यानी कि मार्केट को टैप करना है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें लोगों को समझना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप इनोवेशन की बात करें, मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, कल ही आप यहाँ पे हमारे वो अजीजुर रहमान साहब आए, वो बोन आर्ट मेकिंग में वो इन्वॉल्व है. अब वो कल उसने दिखाया, दैट इज यू नो दैट कॉस्ट इज 30,000. उसको कौन खरीदेगा? उसको वही खरीदेगा जिसके पास मकान भी होगा, जिसके पास बाकी जो बेसिक नीड्स वो होंगी, उसके बाद हम उस चीज का सोच सकते हैं. सो दैट मींस कौन सा मार्केट टैप कर रहा है, उसके लिए पहले हमें लोग समझने हैं. उसके लिए हमें पहले समझना है कि वहां की इकोनॉमी क्या है, ठीक है ना. मैं कोई अभी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूंगा, मुझे मार्केट देखना है, मेरे प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहेंगे या हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स रहेंगे, उसका कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली जाएगा, बट खरीदने वाला कौन होगा. सो दैट मींस फॉर दैट मेरा एम था ये कि हम ओवरऑल समझे कि हमारी JNK की इकोनॉमी क्या है, नंबर वन. सो उस पॉलिसी में हमने इंडस्ट्रियलिस्ट्स को वो भी मेंबर थे, और वो भी जैसे मैडम ने कहा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स वो भी मेंबर थे. मतलब दे हैड अ बेटर नॉलेज देन अस, despite being an academic, they had a better understanding of the market and better knowledge than us in the subject. हालांकि सब्जेक्ट के वो नहीं थे, वो किसी डिफरेंट फील्ड के थे, लेकिन मुझे लगता है फूड प्रोसेसिंग में उनको हमसे ज्यादा नॉलेज थी, और उनके इनपुट जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल थे कंपेयर टू अस. सो दैट मींस आप में से आप एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स बनेंगे, कल गवर्नमेंट आपको बुलाएगी पॉलिसी करने के लिए. So for that you must have an overall knowledge of all the economy, उसका क्या करना है, इसका क्या बनेगा. So that means you will be taken on board, right? Number 2. So you need to have a proper understanding of economy. So just like if you are economically sound, then and only you can think of innovations, you can think कि मुझे वो चीज करना है, ये चीज करना है, वो इसमें है. और मैडम हमारे SKUAST में भी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर इसके बहुत पीछे हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फर्स्ट फैकल्टी स्टार्टअप पॉलिसी है. बिकॉज प्रीवियसली हम नहीं सोच सकते, मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अब बिजनेस एस्टैब्लिश करूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी है SKUAST की कि जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, बी इट एनी काइंड ऑफ बिजनेस. सो वी हैव अ पॉलिसी फॉर दिस. सो दैट मींस वी हैव टू कम आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, वो एक चीज है. So ये मुझे एक्चुअली कहना था. So that was actually the reason to why I selected the topic जो मैंने मैडम के साथ बात की थी, just to make understand कि हमारी इकोनॉमी क्या है. Because it's being said, अगर हमें इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की वजह से ही हम सक्सीड हो सकते हैं.
क्योंकि डिसीजंस लेना, हमारे मार्केट्स कैसे काम करते हैं, हाउ रूल्स आर अफेक्टिंग अस, ये सारा इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है. सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. मैडम, टू बी वेरी frank, I have done my BTech, then MTech, then PhD, starting from 2007 until now, so it has been almost 15-16 years. Economics was my favorite subject because we had one subject in BTech and MTech. That was my very favorite, because we need to understand this. So अभी तक मैंने इससे अच्छा लेक्चर नहीं सुना है. To be very frank, मुझे तो इसमें एटलीस्ट ये चीजें तो पता चली कि मैं कहाँ पे कल इन्वेस्ट कर सकता हूँ. Because that is very important. It's not कि मैं फूड टेक्नोलॉजी को तो मुझे फूड टेक्नोलॉजी का ही सोचना है. मैडम ने इतने सेक्टर्स अच्छे दिखाए कि मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर कल को मैं सोच सकता हूँ कि कौन सा मैं ये एरिया टैप कर सकता हूँ. सो मैडम, थैंक यू सो मच. आई नो इसमें काफी टाइम भी लगता है बनाने में, स्पेशली दिस डाटा एंड ऑल, इसमें काफी टाइम लगता है. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. I request Madam to accept this token of appreciation from our university. Please, Madam. Thank you so much. Done? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, so that's all for today. Tomorrow we have 3 more lectures. Then on Sunday I am trying to arrange a visit to